Okay. And let's move to the preparation of interview then. Because there were three, four questions on interview. I'll just read out briefly. One question was, can the interview be in English? Or no, Hindi and English combined? Can a person answer the questions in this way? Then second question was, what kind of questions were asked in the interview? And were the panelists more interested in the knowledge related to SEBI? And how to prepare for the interview. So these are the three questions that are there with respect to the interview. So we can start with any one of you. So, ma'am, with regards to language, I am not very sure because my interview was totally in English. But I've heard someone giving the interview in Hindi also. So I am not very well versed with this fact. Secondly, with regards to, ma'am, can you repeat the questions again? Yeah. Second was with respect to, is there specific focus on the securities law in the questions that are being asked, and what kind of questions were asked from you, and how to prepare for the interview part? So, ma'am, I'll answer this by saying that do not focus upon the fact that they are only checking your personality. So even though they have checked your knowledge in mains, but also they are again also focused upon your knowledge in interview also. So it is bit technical. So we cannot leave the fact that you can just do away with the fact that you don't need to read more. So focus upon SEBI, what SEBI is, and what it is doing like nowadays. What are the recent activities that are being done by SEBI? So these are the things that we need to know, and we need to know about SEBI. It is very important. With regards to securities law, I my friend had this incident, so he was also giving SEBI interview, and he's a judiciary candidate, and he asked the panel members to ask him questions on judiciary and not securities law. So the panel member themselves like question this fact that you are coming to SEBI, you need to know about securities and corporate laws. You cannot just do away with the fact that only whatever you know we will ask question on that. No. Thirdly, ma'am, one of the most important thing is that you need to whatever you are saying. First of all, it has to be honest. Second of all, you need to be well prepared for it. Like so, if I'm saying that I have a working experience in online arbitration for that matter, so there are going to be questions on online arbitration. You cannot leave this fact. Even in SEBI also they're introducing online arbitration. So there were a lot of questions for me on online arbitration. And what I've done like with regards to IBC, so I have a prior experience in insolvency. So what I've done and how, and then they will ask certain questions like interlinking between IBC or online arbitration with SEBI. So they can do because you cannot just think that they don't know about the subject area because the people who are like sitting there, they know everything from constitution to any corporate law that you will be talking about. Even they prepare questions accordingly. So for me, like they will ask me, they will ask initially about like give me your introduction, and then after introduction, what have you done prior? Then there will be questions completely on that basis only. So yeah. Okay, and Harshit, how was your interview? And were there questions related to securities law? And how did you? Yes, ma'am. First, I would like to clarify on language. Ma'am, as I am a completely Hindi medium student, I have law only in English. So when PIF form, personal information form came, I preferred Hindi as a language of interview. But I have given some mocks interviews. So in Hindi interview, I have seen that one panel member was unable to understand topics what I was being understand them. In Hindi, he was very confused. He was like, समझ नहीं आ रहा है कि आप इंटर में ट्रांसलेट करो, मैं ऐसे बोल रहे थे. तो उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू किए तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि सेबी में भी काम इंग्लिश में ही होता है. Most of the work in SEBI is related to drafting, and drafting is done in English language. So he advised me if you can speak good English, so prefer English as a medium. So I have written Hindi as a medium of interview, but I have given interview in English. But one of my friends, as if he's from AMU, he has given interview in Hindi. So I think he has scored a good mark. So I don't think that if someone is comfortable in any language, he can speak in Hindi as well. Okay. And ma'am, second question, someone was asking कि सिक्योरिटी लॉ से क्वेश्चंस होंगे या कॉर्पोरेट लॉ से. सो मैम मैं बोलूंगा कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं. इवन उन्होंने तो मुझसे पूछा था कि आपके पापा क्या करते हैं, आपकी सिस्टर्स क्या करती हैं, और जैसे
एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे मैंने साइंस पहले किया तो उसके बाद मैंने लॉ, सो आई वुड से दैट जैसे मुझसे मैम सिक्योरिटीज लॉ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, केवल सेबी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। उसके अलावा जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, क्रिमिनल लॉ में मैंने इंटर्नशिप वगैरह की थी, तो उन्होंने क्रिमिनल लॉ से कुछ क्वेश्चन पूछे और बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन पूछे। और मुझे लगा था कि मैंने शेयर मार्केट्स के बहुत सारा रिसर्च किया था कि कैसे क्या होता है, लेकिन उससे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। सो आई थिंक इंटरव्यू इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट unexpected part of this preparation. So we have to prepare for everything, I would say. Okay. And we have to be confident while answering the question. If we don't know, then we can simply say that, sorry sir, I am not aware. But I think be confident and be prepared for any questions. Okay. And what about you, Mrinan? How was your interview? Whether there was stress in securities law, and about this language issue also, Hindi and English. मैम आई डोंट नो अबाउट दिस लैंग्वेज थिंग कि वो आपको इंग्लिश के लिए फोर्स करते हैं या नहीं, हिंदी के लिए करते हैं या नहीं, या बाइलिंगुअल जा सकते हो नहीं। माय इंटरव्यू वाज इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश ही पिक किया था बिकॉज आई नो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी हैव टू डील पीपल who are not writing and speaking English. So I did like that. About the interview, okay, I'm gonna take my time because मेरा इंटरव्यू बहुत ही ऐसे ग्रिलिंग टाइप हुआ था। तो see, there are 4 people and वो एज हर्षित सेड, वो आपसे कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। तो जब मेंस क्लियर हुआ, पता पड़ा कि मैं इंटरव्यू जा रहा हूँ, द फर्स्ट स्टूपिड थिंग आई डिड, मैंने टेक ओवर कोड पढ़ना स्टार्ट करा। मैंने टेक ओवर कोड्स के नोट्स बना के एग्जाम्पल पढ़, उसको इतना डीप पढ़ लिया अननेसेसरीली। फिर मुझे बाद में थोड़ा फील हुआ, कुछ लोगों से सुना कि किसी भी चीज को बाय हार्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। यू हैव टू कीप योर सरफेस इंटैक्ट। आपको आपकी नॉलेज, आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको हर चीज के बारे में डीप में बताओ। क्वेश्चंस की बात करें, दे आस्क्ड मी अबाउट टॉर्च का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला क्वेश्चन, राइलेंस एंड फ्लेचर, उसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। दे आस्क्ड मी अबाउट मेंस रिया एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, देन दे हैड क्वेश्चन की सेबी का जो लोगो इस साल हमने चेंज किया है, इसका आईपीआर वैल्यू क्या है, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इसका जरूरी है या नहीं, ऐसे करके क्वेश्चंस थे। एंड देन दे आस्क्ड मी कि आई हैड अ गैप ऑफ 3 years बिकॉज आफ्टर माय 10+2 आई प्रिपेयर्ड फॉर प्री मेडिकल टेस्ट एंड ऑल, तो उस चीजों को लेके। एंड अब उन 4 मेंबर्स में से यूजुअली देयर विल बी पीपल जो आपके वहाँ पर रैगिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। आपकी रीडिंग अच्छे से होएगी, वो आपको देखेंगे इस तरह की, उनका गोल है कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी, आपको एम्बेरस करके देखना चाहते हैं कि वो आप कैसा बिहेव करोगे। उसके बाद अगर आप हंस रहे हो तो ठीक है, वरना फिर वो आपकी और ग्रिलिंग करेंगे। आप सेलेक्ट हो जाओगे लेकिन आपकी ग्रिलिंग हो सकती है। सो ये सब था। क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। मेरी प्रोफाइल बेस्ड भी थे, सिक्योरिटी लॉस के ऊपर बेस्ड भी थे, एंड जनरल क्वेश्चंस भी थे, मेरे कॉलेज लाइफ को लेके क्वेश्चंस भी थे। एंड आई वाज सो हैप्पी, आई स्कोर 12.25। इतनी ग्रिलिंग के बाद तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे मृणाल ने कहा कि ड्रिलिंग करेंगे इंटरव्यू में, सो मुझसे अडानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था मैम ने, और मैम ने कहा कि सेबी पे ये एलिगेशन है कि हमने कुछ नहीं किया। तो मैं उसका वही बैलेंस आंसर दे रहा था कि सेबी ने कुछ किया। सो वो बार बार ऐसा फोर्स कर रहे थे मुझे कि मैं बोलूं कि सेबी ने कुछ नहीं किया। सो बट आई हैव टू स्टिक दैट सेबी ने कुछ किया है एटलीस्ट। सो फिर बाद में उन्होंने कहा कि चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। उसके बाद मैम एक चीज और मैंने देखी थी कि उन्होंने मुझसे कुछ सेक्शन पूछे थे सेबी ऐप से ही, बहुत सिंपल सेक्शन थे, लाइक इन्वेस्टिगेशन किसमें है, तो मैंने बोला 11C में। तो वो मुझसे 30-40 सेकंड तक बहस करते रहे, नहीं 11C में नहीं, 11B में है। वो मैम थी, इतनी उनको नॉलेज है, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ट्रैप कर रहे हैं कि मैं अपना आंसर चेंज कर दूं। नहीं नहीं मैम, शायद 11B में ही होगा। सो आई थिंक इन इंटरव्यू वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। इफ वी नो एनीथिंग वी हैव टू स्टिक टू इट। इफ अगर उसमें भी अगर फंस रहे हैं तो बोल दीजिए शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट इनिशियली आई थिंक स्टिक टू योर आंसर। दे विल ट्राई टू ट्रैप यू एंड आपको अपना आंसर चेंज कर दें, आप फंस जाए। वो ऐसा चाहेंगे कि किसी इंटरव्यू में हो सकता है, जैसे मृणाल ने कहा कि कभी कभी ड्रिलिंग हो जाती है, तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। And Ashish, I'll add one thing. I'll add one thing because now as we are discussing like in the interview moments, there are like past memories coming up in my head. There are a lot of things that are coming up. So during my interview also, so basically we are there to sell ourselves. So we need to be very specific in what we can say, what we cannot say, what we have done. So we can even hide some information. Like
because so I had a background of indirect taxation also a little bit. I worked there, but I know I'm very poor at that. So I know if I say indirect taxation, they'll grill like me at like a lot. So I was very specific. I'll not say indirect taxation. So you need to like basically you are there to sell yourself. You need to be very specific in about what are your strengths and just speak like those strengths only. Because you got only 15-20 minutes, and even like I remember. It was one of the panel members who like told me that no, like so they were very chill. I believe during my interview because I was fourth in number and it was on my interview was on the first day only. So they were pretty chill at my time and they literally so I think it was one of the lady members, I can't remember, but she told me that don't act like my child. And I was pretty shocked at that time. Why is she asking? Like, so I was literally like quiet for 30-20 seconds because I didn't know what to say. Then she told me that no, you speak very fast, and my child is also like he also speaks very fast. So have a little patience, and then she offered me glasses. So I was not very nervous, but this is how I generally speak. So I was shocked at this point of time. Yeah, this is it. Okay. There was one more question. So I think every one of you have got good insights related to interview and how was the interview for all three, Mrinal, Harshit and Ashutosh. One student was asking about your interview scores. So we know about Mrinal. Can Ashutosh and Harshit also share their interview scores? So I got 9, ma'am. Okay. Ma'am, 8 marks. Okay. So probably your phase 2 marks are really very good. Yes, ma'am. Ma'am, I would like to add one thing. Like, मैम जैसे मैंने बताया कि मैं जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन मैम ने भी पूछा था कि आप जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो पहले जब हम लोग कैंडिडेट डिस्कस कर रहे थे तो ये बात डिस्कस हुई थी कि जुडिशरी के बारे में नहीं बोलना इंटरव्यू में. बट आई डोंट नो, मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया कि यस मैम मैंने कुछ अटेम्प्ट दिए हैं. तो उन्होंने पूछा कि अटेम्प्ट दिए आपका क्या हुआ, तो मैंने बताया और मैंने जस्टिफाई भी किया कि सेबी इज माय प्रायोरिटी. बट आई थिंक जो मैंने बोल दिया कि यस आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर जुडिशरी एंड आई एम ए जुडिशरी एस्पिरेंट, तो आई थिंक कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा, शायद 1-2 मार्क्स कट गए होंगे. So I would say that don't say that you are a judiciary aspirant or UPSC candidate, RBI aspirant. Just say I am only preparing for SEBI exams, or you can say that banking exams because they are still less prestigious than SEBI. So I would say that But say only those things you can back it up. Like because there will be, if there are counter questions and you cannot back it up, then there will be a huge issue. Because I'll suggest like keep the lying part very minimum. And even if you're not saying like I'm not preparing for judiciary and all, you need to specify what have you done like for like this 1 year, past 1 year or 2 year. So just be prepared for all these questions. Right. Okay. So I think we just skipped one question, but I think we had good discussion on the interview part. So no more questions related to interview.